Look at the definition of cylinder. A surface generated by a straight line which is parallel to a fixed line and intersect a given curve or touches a given surface is called a cylinder. And so once so the fixed straight line, we will name it as axis, and the guiding curve, see, this one is the guiding curve, this one is your axis, and this one is the generator, which is this one is the generator, the moving straight line. The moving straight line in its different position give the different generator of the cylinder. So after this, we have covered how to find equation of cylinder. So if you look at here, then equation of cylinder is, yes, equation of cylinder. What conditions are given here? This one is the particular case in which axis of the cylinder is known. Suppose axis of the cylinder passes through origin. Axis of the cylinder passes through origin, and this and obviously, see, as per definition, generator is parallel to axis. And suppose your guiding curve is given combinedly by this equation, then what will happen that since axis is known, it is passing through origin. Some origin is suppose somewhere, may not be here, it can be anywhere. And element are direction ratios of the axis. So we know how to write a line parallel to this axis and passing through alpha, beta, gamma. So you can write here that x minus alpha by L equal to y minus beta by L equal to m equal to z minus gamma by n is the required equation of the generator. And since this generator is meeting the guiding curve, so it must satisfy the guiding curve. So what will happen that when we guiding curve is combinedly given by these two equations. So once we put z equal to 0 here, we have x coordinate as this one and y as this one, and z is 0. But guiding curve is combinedly given by these two equations, and we have used only z equal to 0. So you need to put the value of x and y here in this equation and z. So from there you will get this equation. This one. But look, if you look at the geometry, then which locus of which point is going to generate you this cylinder? So clearly see, if alpha beta varies, then you will get this line, and since it is revolving, so you will get cylinder. So this is the reason why at last we replace alpha by x, beta by y, and gamma by z. So once guiding curve is given and equation of axis is given, so this is the technique to derive equation of cylinder. Is this clear to everyone? Important point is here is that guiding curve is given and equation of axis is given. So then one can easily write equation of cylinder. Now come to the next page. Actually, this already I have discussed here. Just I'm recalling all those things so that now in next lecture, I think in this one, yes. Okay. Now you can see here that okay. Again, go through this proof. Right circular cylinder. एक बार रिवाइज कर लें, फिर पढ़ाता हूँ. So what is the difference between right circular cylinder and cylinder? Right circular cylinder is the particular case of cylinder. And if you look at the definition of right circular cylinder, then a right circular cylinder is the surface generated by a straight line which is at a constant distance from a fixed line called axis and parallel to it. And the constant distance is called radius of the cylinder, and the fixed straight line its axis. So this one is the axis and this one is the generator. Generator here shown. These are generators. Basically, these are not two lines. There are infinite lines on this curve. I mean, on this cylinder, infinite generators. But since we are projecting on 2 dimensions, so it looks like that there are only 2 lines. Okay. Actually, on this surface, all these are generators. On this surface, all these are generators.
ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? नाउ लुक एट द टेक्निक हाउ इट इज डेराइव्ड ना, ये थोड़ा समझना इसको जरूरी है, आप पढ़ लो। देखो, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, व्हाट आर द थिंग्स गिवन टू अस and how to write equation of right circular cylinder. So if you look at the, suppose your axis of the cylinder, I mean axis of the cylinder passes through alpha, beta, gamma, passes through alpha, beta. Here we have difference. Alpha, beta, gamma lies on the axis, not on the generator. Note this, these important points. And L, M, N are direction ratios of the axis. Suppose P be any point on the generator. So if you draw perpendicular from this point P to the axis N, say it perpendicular at N, then obviously this distance is going to be called as, this is going to be your radius. Radius. Let me denote it by R in this way, because already I am using alpha, beta, gamma here. Gamma. Okay. So suppose this one is your radius, R. You can write it here as R. Now you can see that if let P be any point of the generator parallel to axis. So what will be direction ratios of AP? See, whenever 2 points are given, coordinates of A and coordinates of B are known, so their corresponding slot difference will give you the direction ratios of the line AP. And AN, direction ratios of AN is already given as LMN. Now suppose the angle between them is theta. Suppose the angle between them is theta. Suppose the angle between them is theta. So you can see that we know this formula, that whenever direction ratios of two lines are given, the angle, how to find angle between them. So this one is AP cross AN is given by magnitude of AP, magnitude of AN into sine theta into unit vector n cap. Okay. So AP cross AN is given by magnitude of AP, magnitude of AN into sine theta into unit vector n cap. N cap is the unit vector normal to the plane containing AP and AN, vector AP and AN. Now, how to find radius in terms of AP? See, this radius can all, if basically this one is the R, from this diagram, R is equal to magnitude of AP into sine theta. This component will be sine component of AP. So R is equal to magnitude of AP into sine theta, and from this formula AP is there, sine theta is there. So after taking its magnitude of unit vector n cap will be 1. So from here retain AP and sine theta. So AP sine theta will be AP cross n by magnitude of n. This denominator is scalar quantity because already we have taken its magnitude. And this must be equal to R. So one can write AP cross n. AP cross n. Actually, this formula we have generated AP cross n by magnitude of n. And R radius. This one is basically radius R. Radius R. This is not gamma. Radius R. Okay, so R is equal to AP cross n by magnitude. Now we know how to compute AP and I mean AP cross n, magnitude of AP cross n. So here the first one is for determinant, and this one is the outside. This sign is for magnitude of the vector. So once you put it and cross multiply, you will get equation of cylinder. ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, किसी को डाउट तो नहीं कोई? इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आज. इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको, खास करके किसी भी, जैसे आप स्टेट सर्विसेज वगैरह में बैठोगे ना, इसमें यूपी पीसीएस वगैरह में बैठोगे, तो ये सब टॉपिक्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं. तो देख लें, अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दें. एक फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे देख सकते हो. But finally we are getting R square. This one is radius. So radius square is into product of these element direction ratios square sum. L square plus M square plus N is equal to N times y minus. Now look at the symmetry here. L M N X Y Z L M N and alpha beta gamma. Now you can look here the symmetry. N times y minus beta. See, n is there, then y, and just below it beta is there. N times y minus beta minus m times
now m times z minus gamma, its whole square. So this one is, this formula is moving in this way. So there is no need to remember this formula. Just remember r is equal to ap cross n by magnitude of n. Put this in determinant sign, cross multiply and square it. You'll get equation of right circular cylinder. चले, अब ये लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं हम लोग कर पाए थे. So based on this, there is a question in your book. Find the equation of right circular cylinder of a radius 2 whose axis is the line half of x minus 1 equal to y minus 2 equal to half of z minus 3. So if you compare with the previous equation, what you will have? X minus 1 by 2, right, in standard form, y minus 2 by 1, z minus 3 by 2. So these 1, 2, 3 are basically are points lying on the generator, sorry, axis. 1, 2, 3, because this one is equation of axis. So 1, 2, 3 lies on axis. 1, 2, 3. 2, 1, 2 is direction ratios of the axis. Now, so I mean, in these notations, one can write alpha, beta, gamma as 1, 2, 3, LMN as 2, 1, 2, and R equal to. So either you put in this determinant, or you can directly substitute here. You will get the required equation. चलिए solve करके देखें आंसर आ रहा है कि नहीं. Verify करें, बुक में आंसर दे रखा है. I think its answer is 5x square plus 8y square. This one is basically a solved example in your book. I'm just trying to explain the concept involved here. 5z square, because in your book they have directly used this formula, citing previous article. So 5x square plus 8y square plus 5z square minus 4xy minus 4yz minus 8zx plus 22x minus 16y minus 14z minus 10 equal to 0. ठीक है, चलिए वेरीफाई करके देखिए. मैं ट्राई करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन पोस्ट करें आप लोग. पेन कॉपी लेके बैठा करें आप लोग. ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको आप लोग वेरीफाई करके और व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्यूशन पोस्ट कर देंगे, मैं चेक कर दूंगा. ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ दे रखा है नए पेज पे जाने के लिए. So question number 1. Find the equation of the cylinder. Find the equation of the cylinder whose generators are parallel to the line and passing through the curve x square plus 2y square equal to 1, z equal to 0. चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें. पेज नंबर 357. पेज 357 आर्टिकल मैंने करा दिया. इस पे आपको ये पहला केस है ना. इसमें देखो आपको एक्सिस का इक्वेशन दे रखा है. दिस वन इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड दिस वन इज गाइडिंग कर्व. तो आपको पहला आर्टिकल जो कराया था जिसमें एक्सिस और गाइडिंग कर्व, तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करेंगे? First of all, you need to write an equation passing through alpha, beta, gamma, some point on generator, and which is parallel to the given axis. Which is parallel to the given axis. This one is your axis, and this one is guiding curve. Guiding curve.
and that guiding curve is going to meet this, that generator is going to meet this guiding curve. So in that equation, write z equal to 0 and obtain value of xy, substitute here, and replace alpha beta gamma by xyz. Just look at the previous article. We have already done this. See, this one direction ratios of this is given 1 minus 2 comma 3, 1 minus 2 comma 3. And suppose there is any point alpha beta gamma on the generator. This one is your generator. Always try to make diagram. That will help you. And this one is your axis. So, however, your axis is already passing through. If you look, your axis is already passing through origin. There may be, but we don't need that condition. I mean, these are sufficient for deriving equation of cylinder. So, I'm giving you 3 minutes time. Try this, and then I will discuss. It's 27:47. So, I will discuss at 30. Okay, let us discuss it. What solve किसी से? Suppose this one is your point P. What is equation of generator? Equation of generator passing through P alpha beta gamma and is parallel to axis x by 1 is equal to y upon minus 2 is equal to z upon 3. Equation of generator passing through P, this point alpha beta gamma, and is parallel to axis x by 1 equal to y by minus 2 equal to z upon 3 is so that will be x minus alpha upon, see their direction ratios for two parallel line will be same, proportional. So you can use the same, x minus alpha upon 1 is equal to y minus beta upon minus 2 is equal to z minus gamma upon p. So you can call this one because this one is equation of generator. Since generator is going to meet the guiding curve, since generator 1 meets the guiding curve, so put z equal to 0 in equation 1. This implies x minus alpha upon 1 is equal to y minus beta upon minus 2 is equal to z 0 minus gamma upon 3. Now simplify these two. Why is the screen? You must minimize. Is not it? Is it visible? दिख रहा है आप लोगों को ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. So x minus alpha upon 1 equal to y minus beta upon minus 2 0. तो यहाँ से क्या मिल गया x की वैल्यू? x is equal to alpha minus gamma upon 3. कैलकुलेशन देख लेंगे. And y is equal to 2 gamma by 3. 2 gamma by 3 beta plus 2 gamma by 3. ठीक है ना? माइनस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 2 गामा बाई 3 माइनस माइनस प्लस, और ये बीटा इधर आ गया राइट साइड में, एंड z इज इक्वल टू 0. बट guiding curve is given by these two combined equation, and I have used only z equal to 0 here. So put value of
xy in x square plus 2y square is equal to 1. So this implies alpha minus gamma by 3 whole square plus 2 times y, beta plus gamma, 2 gamma by 3, its whole square is equal to 1. See, it's not written that you need to write your answer in terms of a particular format. If it's given, then you need to simplify it. Otherwise, you can leave here. Now, locus of which point is going to generate cylinder? This one is a clear from diagram. Locus of which point? Sir, alpha, beta, gamma. Very good. So for cylinder, locus of alpha, beta, gamma, replace it by x, y, z. This implies x minus z upon e, its whole square plus 2 times y plus 2 z by 3, its whole square is equal to 1. So this is your required answer. This is your required answer. टेक्निक समझ में आ गया? अब देखो, अब अगर आप प्रीवियस आर्टिकल को आप रिकॉल करो तो उसमें यही तो था. अगर आपको एक एक्सिस का इक्वेशन दे रखा हो और गाइडिंग कर्व दे रखा हो तो यही टेक्निक हमने यूज किया था सॉल्व करने के लिए. ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? नो सर. है ना, आसान है आर्टिकल, कोई कुछ भी बहुत आसान है. आप देखो तो सिलेंडर, कोन, सब अगर आपको प्लेन और ये सब चीजें आती है ना, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस और कॉन्सेप्ट मालूम है, ये सब आसान टॉपिक है. ठीक, तो स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इज अलोंग द लाइन, व्हेयरएज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये 2 पॉइंट बताया था. और हम कोशिश ये करते हैं कि उसमें और वेक्टर और 3D में डिफरेंस कैसे दोनों पैरेलल चलते हैं, वेक्टर और 3D में, है ना. वेक्टर और 3D में जो जैसा बिहेवियर यहाँ देखा होगा यूनिट वेक्टर का होता है, 3D में वैसा ही बिहेवियर यहाँ क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का. कुछ सिमिलरिटीज बताए थे और कंपैरिजन स्टार्टिंग के लेक्चर्स में. ठीक, अगले क्वेश्चन को करते हैं. दूसरा एक क्वेश्चन और कर लेते, टाइम है अभी 9:35 हो रहा है ना. हाँ, 15 मिनट्स है. So next question is question number 2 from your book. So question number 2, page number 357. So find the equation of the right circular cylinder, right circular cylinder of radius 3 unit and having for its axis the line x minus 1 upon 2 is equal to y minus 3 upon 2 is equal to z minus 5 upon minus 1. चलिए ट्राई करें और इसमें देखिए ये आंसर आ रहा है कि नहीं. आंसर मैच करें आप लोग. आंसर बुक में जो दे रखा है वो है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस. एक सॉल्व करके देखिए खुद से. वैसे तो मैं आर्टिकल ये करा दिया है प्लस, और ये किताब क्योंकि पुरानी है तो देख लेंगे प्लस माइनस साइन का. अपना जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसको वेरीफाई कर लेंगे. -8xy प्लस 4yz प्लस 4zx minus 6x minus 42y minus 96z plus 225 equal to 0 plus 225 equal to 0. इसे वेरीफाई करें ये आंसर आ रहा है कि नहीं. क्या यूज करना है इसमें, क्या कंडीशन दे रखी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द. अब वो डायग्राम आप रिकॉल करो जो आपको डायग्राम कराया था AP क्रॉस AN वाला. अगर आप उस डायग्राम को रिकॉल करो तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन कर सकते हैं. तो ये मान लो सिलेंडर है, एक तरफ डायग्राम बना लें. इतना परफेक्ट सिलेंडर तो मुझसे नहीं बन रहा.
लेकिन यहाँ पे क्या था, क्या हमने पॉइंट लिया था, कहीं यहाँ पी लिया था, यहाँ पे एन था उस डायग्राम का, और यहाँ पे कहीं पॉइंट ए था, है ना, एक्सिस पे. दिस इज बेसिकली एपी क्रॉस ए एन. AP cross EN, and this is radius. This radius is already given 3 unit. As per question, radius is given as 3 unit. Okay. So look, always write what is given to you. Suppose there is any variable point P. Okay. Find the equation of right circular cylinder of radius 3 units and having its axis, the line this x minus 1 by 2. So 2, 2 and minus 1 are basically direction ratios of the axis. And generator, this one is your generator. Later on we will see that there are infinite generators flying on this cylinder. That article, I will come to that article. And look, the coordinates of A is given to you. Coordinates of, what are coordinates of A? This line is passing through 1, 3 and 5. 1, 3 and 5. And suppose the coordinates of point P are alpha, beta, gamma. Suppose the coordinates of P are alpha, beta, gamma. So for locus, we will later on replace alpha, beta, gamma by x, y, z. Now you know how to find AP and how to find AN. So radius is given by AP cross AN. Its magnitude upon AN. Am I right? Look at the previous article. देखो previous article में क्या कराया था, आपको डायग्राम भी मैंने समझा दिया था. मैंने समझते यहाँ था शायद इस वाले पेज पे. हाँ देखो, R इज इक्वल टू क्या यहाँ आया था, AP क्रॉस AN अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AN. तो इस डायग्राम में क्या क्या चीजें दी हुई थी. अच्छा, अल्फा बीटा गामा ये पॉइंट था, हमने इसमें ये लिया था, यहाँ एक्स वाई जेड ले लिया था. तो आप पहले कुछ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लो, या देखो फर्क है यहाँ पे. बाद में लोकस के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड से. लोकस के लिए क्योंकि लोकस हमें किसका निकालना, पॉइंट पी ये मूव करेगा ना, तो ये जनरेटर जनरेट होगा, और क्योंकि रिवॉल्व कर रहा है वो इस फिक्स लाइन के अबाउट, तो सिलेंडर जनरेट हो जाएगा. तो हमें वेरिएबल जो होगा बेसिकली एक्स वाई जेड होगा लोकस के लिए. यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को नहीं रिप्लेस करेंगे, तो अल्फा बीटा गामा आपको फिक्स पॉइंट दिया होगा, वही क्वेश्चन में दे रखा है. So just apply this formula, R is equal to AP cross AN by magnitude of AN, and you know how to write. So let us use the same notation so that you can consider here alpha beta gamma, or let me write change the notation here. You can call it x dash y dash z dash and then replace it by at last by x y z. या कोई और notation ले लो. You can call this one as x dash y dash z dash, and then for locus at last you need to replace x dash y dash z dash by x y z. Now what will be AP? AP कितना होगा, या और should I write directly? अब इतना तो आप समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार स्टेप नहीं, पिछले लिख चुका हूं मैं. तो ऐसा करते हैं, R is already given, radius is 3 units, so let me write 3 is equal to AP cross AN. So first of all, write AP cross AN. What is AP cross AN? So AP is given by direction ratios of the line AP. Let me write here AP. Direction ratios of the line AP are x dash minus 1, y dash minus 3, and z dash minus 5. Z dash minus 5. And what is AN? Direction ratios of AN are already given to you. Direction ratios, yes, 2, 2 and minus 1. So just use it. So first is AP, so write IJK here, IJK AP. So direction of ratios of AP are x dash minus 1, y dash minus 3, z dash minus, this one is z, z dash minus 5, and AN, vector AN. So you can write it as 2, 2 minus 1. So this is your AP cross AN, and outside it there is again a magnitude. So let me put a bigger sign here. This one, sorry, this one is a for magnitude. ठीक है ना?
and division by scalar is defined. See, in vector, division by vector is not defined. In denominator we have scalar, this one is scalar. So magnitude of n is, I mean, you can write under root, you can directly write n, already it's known. So you can write this one is under root 2 square plus 2 square plus minus 1 whole square. ठीक है ना? अब इसको सिंप्लीफाई करें, अब आंसर मैंने बता दिया, दिस वन इज 3. सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं. चलिए प्रोसीड करें इसे सॉल्व करके, मुझे आंसर बताएं. सब लोग वेरीफाई करें, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं सही. Simplify it and check your answer. You have 5 minutes. सॉल्व करके चेक कर ले, आंसर हो सकता है गलत भी हो. अगर गलत है तो देखते हैं क्या गलत है. क्वेश्चन नंबर 2 था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 आ रहा है इधर. अच्छा हाँ, हो सकता है सिंप्लीफाई करके आ रहा हो, ऐसा भी नहीं कह सकते यहाँ से. देखो ये तो यहाँ 3 हो गया, ये क्या इतना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 9 हो गया, 9 का स्क्वायर रूट 3. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर कितना हो गया, 3 × 3 इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड करो कितना हो जाएगा, i टाइम्स ये रो और ये कॉलम छोड़ दे, कितना हो गया, y डैश माइनस 3 माइनस, इनफैक्ट -1 भी होगा यहाँ प्रोडक्ट में, माइनस z डैश माइनस 5 × 2, ये ब्रैकेट हुआ, माइनस j टाइम्स, ये तो मालूम अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग. सो माइनस j टाइम्स x डैश माइनस 1 माइनस z डैश माइनस 5 × 2 प्लस 3 x डैश माइनस 1 × 2 माइनस 2 टाइम्स y डैश माइनस 3. Sorry, not square here. Next time we will do square. So remove square from here. ठीक है, I times y dash minus 3 minus 1 minus z minus 5 z dash minus 5 × 2 माइनस, ये तो पहला टर्म हो गया और यहाँ ब्रैकेट हो गया क्लोज, ये माइनस j टाइम दिस किया और इसका मैग्नीट्यूड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. तो ये और क्या होगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. मैं तो चाह रहा हूँ चेक करना है कि एक कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, सही रहेगा ना, वरना हमेशा डाउट रहेगा कि सही है कि नहीं. इसको मिनिमाइज करने में इसके लिए जरूर हो जाएगा. तो अब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ कितना हो गया, 9 इज इक्वल टू अंडर रूट और फिर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. तो आई तो यही हो गया y डैश माइनस 3 into -1 minus z dash minus 5 into 2 its whole square plus x dash minus 1 into -1 minus z dash minus 5 into 2 its whole square
plus third term. So that will be x dash minus 1 into 2 minus 2 times y dash minus 3 into 2 its whole square root. Now square both sides. Squaring both sides. Both sides are non-negative. So on squaring both sides, we have here 81 is equal to, you can write here y dash minus 3 times minus 1 minus z dash minus 5 into 2 its whole square plus x dash minus 1 into minus 1 minus z dash minus 5 into 2 its whole square plus x dash minus 1 into 2 minus 2 times y dash minus 3 into 2 its whole square. So yes. Now compute coefficient of x dash. Let us check coefficient of x dash. See from where we are getting x dash. देखो x dash कहाँ से आएगा? एक तो यहाँ से आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है x dash, है ना, और कहीं है नहीं. तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये x dash minus 1, मान लो स्क्वायर भी करोगे इसका और इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से x dash का होल स्क्वायर, यहाँ से कोफिशिएंट आ गया 1, x dash 1 टाइम्स आएगा प्लस यहाँ से कितना आएगा, ये 2 है, 2x dash. तो 2x dash का जब आप स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4x dash, जिसमें चेक कर रहा हूँ कितना आएगा, 4x dash है ना, 4x dash होल स्क्वायर, 4x dash होल स्क्वायर और यहाँ 1x dash होल स्क्वायर आएगा. और कोई टर्म आ रहा है x dash का कहीं से? मेरे इसमें से और तो नहीं आना चाहिए. तो 4 और ये 1 5x dash होल स्क्वायर, इस तरह का टर्म देखो आ रहा है. आप 5x स्क्वायर, बाद में आप x dash स्क्वायर को रिप्लेस x dash बाई x और लोकस y dash by y and z dash by z. So you are getting that we are getting 5 which is already here. ठीक है, तो आप, मैं कैलकुलेशन छोड़ो, आप खुद से कर लेंगे, इसको कर लेंगे करके और व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर देंगे. किसी कोई डाउट है तो पूछ ले. कोई डाउट नहीं? नो सर. ठीक है, मैं क्लास एंड करता हूं यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे सॉल्व. थैंक यू सर. नोट्स में Thank you, शेयर sir.